Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for CMAT 2024 exam because in this video I will discuss 100 most important GK MCQs on Indian Constitution. Guys, Indian Constitution या Indian Polity काफी important topic है. आपको इससे CMAT के क्वेश्चन मिल सकते हैं एंड ये 100 क्वेश्चंस को आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना. मैं मानता हूँ ये 100 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो मैंने 100 क्वेश्चंस लिए हैं ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चंस लिए हैं. तो बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं एग्जाम में. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. एंड जो लोग चैनल में न्यू है, हम लोगों ने 1000 जीके एमसीक्यूज का डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वन शॉट वीडियो. उसको आप जरूर देखना. ठीक है, वो 2.5 आवर्स का है, उससे काफी फायदा हो सकता है. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये हम लोग का सीमैट टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे डेली शाम को 7 बजे के अराउंड एक सेशन होता है 10 क्वेश्चंस का. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग के बाद हम लोग की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे हम लोग का LRDA PY की प्लेलिस्ट चल रही है. यहाँ पे 22 सेट्स अपलोड हो चुके हैं कैट की. अगर आप कैट देने वाले हो, कैट क्वांट्स PYQs जीके सेक्शन प्लेलिस्ट है, सीमैट की आई सेक्शन प्लेलिस्ट है एंड सीमैट PYQ प्लेलिस्ट है. तो ये जाके आप चेक करो, मेनली अभी आपको ये फायदा करेगा. ठीक है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा. चलो गाइस, तो ये क्वेश्चंस मैं स्टिल बोलूंगा आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना और ट्राई करो कि वीडियो खत्म होते थे आपको याद हो जाए, बट एक बार रिवाइज और कर लेना. चलो गाइस, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, स्टेट गवर्नर जो होता है स्टेट का कैसे अपॉइंट होता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ होम, प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस? 5 years. Who among the following holds office during the pleasure of president, governor? Which of the following is not true regarding the payments of emoluments of the president? क्या क्या है? They can be reduced during a financial emergency. They are shown separately in the budget. They are charged on the contingency fund of India. They do not require any parliament sanction. तो guys इसमें not true कौन सा है? They are charged on the contingency fund of India. ठीक है, तो ये एक चीज गलत है. तो इसका मतलब A, B and D ये सही है, तो ये भी पढ़ लेना आप. The total number of members nominated by the president to the Lok Sabha and Rajya Sabha is 14. ठीक है, which of the following does not constitute the electoral college for electing the president of India? Elected members of the legislative council. Elected members of the legislative council. The council of ministers in a parliamentary type of government can remain in office till it enjoys the support of the majority of members of the lower house of parliament. Majority of members of the lower house of parliament. Which of the following appointments is not made by the president of India? Speaker of Lok Sabha. Who appoints Prime Minister of India? President. The first woman governor of the state in free India was Mrs. Sarojini Naidu. Minimum age required for the contest for presidentship is 35 years. 35 years minimum age honi chahiye. The charge of impeachment against the president of India for his removal can be preferred by both the houses of parliament. The chief minister of union territory where such a setup exists is appointed by the governor. ठीक है, CM of union territory. तो guys आप पॉज करके दोबारा फिर से रीड भी कर सकते हो. ठीक है, who was the first prime minister of India? Jawaharlal Nehru. In a case of president dies while in office, the vice president can act as a president for a maximum period of 6 months. The Union Council of Ministers consists of cabinet ministers, minister of states, and deputy ministers. Who administers the oath of the office to President of India before he enters upon the office? Chief Justice. Who among the following enjoys the rank of a cabinet minister of the Indian Union? Deputy Chairman of Planning Commission. A person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of 6 months. तो guys, कोई ऐसा है जो मेंबर नहीं पार्लियामेंट का, वो अपॉइंट हो सकता है एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर कितने पीरियड के लिए? 6 मंथ्स के मैक्सिमम. When can a president use his discretion in appointing the prime minister? When no political party enjoys a clear majority in Lok Sabha. If in a country there happens to be the office of monarchy as well as parliamentary form of government, this monarch will be called
head of a state. One feature distinguishing the Rajya Sabha from the Vidhan Parishad is power of impeachment. Chief ministers of all the states are ex-officio members of inter-state council. Who among the following has the final right to sanction expenditure of public money in India? President. Which of the following is not an essential qualification for appointment as a governor? He should be a domicile of the state to which he is being appointed. ये essential नहीं है, ठीक है, गवर्नर के लिए. बी वाला मतलब essential नहीं है. बाकी A, C and D essential है. 35 years की होनी चाहिए, citizen of India होनी चाहिए. He must not be a member of either house of parliament. The president nominates 12 members of Rajya Sabha according to their distinction in the field of science, art, literature, and social service. Which article of the Constitution empowers the president to appoint a commission to investigate the condition of backward classes in general and suggest ameliorative measures? Article 340. कैसे क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिए गए तो हो सकता है प्रिंट होकर आपके एग्जाम में से कोई आ जाए और वैसे भी नॉलेज काफी मिलेगी. Who can initiate impeachment proceedings against the President of India? Either House of Parliament. Who was the member of the Rajya Sabha when the first appointed as the Prime Minister of India? Indira Gandhi. What is the minimum age for the appointment of governor? 35 years. गवर्नर की एज की मिनिमम एज 35 years होनी चाहिए. ये हमने ऊपर पढ़ा भी है यहाँ पे ABD में. Chief Minister of the state is responsible to Legislative Assembly, CM. The administrative and operative control of armed forces exercised by the Ministry of Defense. What is the position of a Minister of State in central government? He is a Minister of Central Government but not a member of Cabinet. Who among the following is directly responsible to the Parliament for all the matters concerning defense services of India? Defense Minister. How many times the President of India can seek re-election to his post? Any number of times. Who among the following has the power to form a new state within the Union of India? President has the power. Is the Prime Minister bound to advise the President on matters on which he advice is sought? Yes. Okay. When the Vice President officiates as President, he withdraws the salary of President. ठीक है. The Vice President को President को किया जाता है, तो salary President की withdraw करते हैं. Who among the following can attend meetings of the Union Cabinet? Cabinet Ministers can attend. Who among the following has the constitutional authority to make rules and regulations fixing the number of members of UPSC? President has the power, authority. Under whose advice President of India declares emergency Article 352? Cabinet Ministers. Who acts as the President of India when neither the President nor the Vice President is available? Chief Justice of India. ये important है guys. अगर PM and Vice President भी नहीं हो, sorry, President and Vice President नहीं है, तो कौन एक्ट करेगा? Chief Justice of India. A proclamation of emergency issued under 36 article must be approved by the Parliament within. इसका आंसर नहीं है क्या? Within 2 months है, याद आ गया. हाँ ठीक है, वो हमने लिखा नहीं था. ठीक है, इसका आंसर है 2 months. ये proclamation of emergency issued under Article 36 must be approved by the Parliament within 2 months. The Union Council of Ministers is appointed by the President of India on the advice of Prime Minister. The President can proclaim emergency on written advice of Prime Minister. Emergency के लिए Prime Minister written advice है Prime Minister से. ठीक है. The Union Council of Ministers is collectively responsible for House of People. Article 78 of the Constitution deals with President's power to send advisory messages to the Parliament. ठीक है. The maximum duration for which the Vice President may officiate as a President is the 6 months. ठीक है. The President's rule in a state can be continued for a maximum period of 6 months. 6 months काफी बड़ा पीरियड है. यहाँ पे अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ 46 में, तो क्या बोला गया था? प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे होगा. ठीक है, ये कुछ पढ़ने में हो गया था, कोई बात नहीं. द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. व्हेन ए स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइंस, who normally exercises his functions till a new governor is appointed?
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर गवर्नर कुछ हो जाता है तो उसकी जगह चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की होंगी। When a financial emergency is proclaimed, salaries and allowances of any class of employees may be reduced. Who appoints the chairman of UPSC? President appoints the chairman of UPSC. Which of the following is correct regarding governor of the state? He can recommend to president to impose president rules in the state. Yes. No money bill can be introduced in state legislature without his prior permission. He has the power of issuing ordinances when legislature is not in session. ये सब सही है. If the president wants to resign from the office, he may do so by writing to the vice president. VP को लिखेंगे हो जाएगा. Is the prime minister bound to advise sort? Yes. ये शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं. तो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. अभी 50 क्वेश्चंस के अराउंड बचे हैं, पूरा देखना. तो गाइस हम लोग का 9th कल हम लोग का ओरिएंटेशन सेशन है एनमैट स्नैप एंड नॉन कैट कोर्स का. तो गाइस मेनी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीमैट का वेट कर रहे हैं. तो गाइस हम लोग का कोर्स जो है एनमैट स्नैप एंड नॉन कैट काफी डिटेल्ड कोर्स है, आपने सुने होंगे रिव्यूज वगैरह. तो फाइनली हम लोग का 9 से ओरिएंटेशन स्टार्ट हो रहा है. एनए के दिन बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. तो कोर्स काफी डिटेल्ड है, 0 से 100 सब कुछ कवर्ड होता है. लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आप कितने बार देख सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग की क्लासेस में सारी वैरायटी क्लास में ही हो जाती है. मतलब ये समझ लो कि 5 से 6 हजार क्वेश्चन क्लास में हो जाएंगे. उसके अलावा गाइस कम से कम 700 से 800 PYQs क्वेश्चंस, टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट सब कुछ मिलेगा विद हार्ड कॉपी बुक्स. हार्ड कॉपी इज इंक्लूडेड नॉन कैट बुक्स. ठीक है. एंड सबसे फ्लैगशिप कोर्स जो है हम लोग नॉन कैट का ही है, क्योंकि नॉन कैट में क्या है, कैट एंड पीजीडीबीए छोड़ के जितने भी एग्जाम्स हैं अभी से लेकर अगले साल में तक सबके कोर्स है, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई विद 4 बुक्स हार्ड कॉपी, वो आपके घर पे डिलीवर होगी. इन द प्राइसिंग इज एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल, दैट इज 11,000. अगर जो लोग कैट नहीं देना चाहते, नॉन कैट देना चाहते हैं, एनमैट स्नैप, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है. इस बार कम से कम 150 बच्चों का एसआईबी एमएससी में चार्डी से कॉल था, एंड कम से कम 40 प्लस का एनएमआई मुंबई से कॉल. ठीक है. बाकी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो नंबर पे, मैं आपको नंबर दिखा दूंगा बाद में. ठीक है, शो कर दूंगा, तो वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना. आपको ब्रोशर, सारा डिटेल्स, रिव्यूज वगैरह, 800 प्लस स्टूडेंट रिव्यूज सब मिल जाएगा. ठीक है. एंड यू इवन वांट डेमो वीडियोस मिल जाएंगे. चलो गाइस, गाइस हम लोग के रिव्यूज हैं, इस तरह के बहुत सारे रिव्यूज आगे मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है. सो गाइस नंबर ये नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं. चलो गाइस, द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे ही अज्यूम्स चार्ज. ठीक है. तो 5-year टर्म कब से कैलकुलेट होगा, जब से चार्ज लेते हैं. हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स? वाइस प्रेसिडेंट. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसिडेंट्स रूल्स प्रोमलगेटेड ऑन एनी स्टेट? आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल. इंपॉर्टेंट है ये, एक बार सीमेट में आ चुका है वैसे. At a time, president rules can be imposed on a state for a maximum period of 1 year. 1 year तक हो सकता है maximum. The chairman of planning commission in India is the prime minister. When parliament is not in session, the president can promulgate an ordinance which is to be ratified by the parliament within 6 weeks from the reassembly of the parliament. ठीक है. 6 weeks है, सॉरी 6 weeks ऊपर वाला है, 6 months हो गया. ठीक है. नीचे आंसर दिया हुआ है. The President of India is elected by an electoral college comprising of electoral college जो होता है, इसमें क्या क्या होता है? Elected members of both the houses of parliaments and state legislative assembly. If the office of the President of India falls vacant, within what time should the next president be elected? Within 6 months. The President can proclaim a state emergency in case of threat to the financial stability, external aggression or internal disturbances threatening the security of the country, failure of constitutional machinery in a particular state. All the above. In the election of the president, the value of the vote of the Lok Sabha members differs according to the number of votes of the representatives. Number of votes a member represents. The Indian president is titular executive. The minimum age required for becoming the prime minister of India is 25 years. The president may, for the violation of constitution, be removed from the office by impeachment. In which of the following situations does the president act in his own discretion? In returning a proposal to the council of ministers for reconsideration. The prime minister, union cabinet minister, chief minister and council ministers all are the members of National Development Council. The president rules in a state means that the state is ruled by the governor of the state. Very important. The chief minister of a union territory
whenever such a setup exists is appointed by the governor. Repeat हो गया. Under which article the Constitution of India can take precedent over the administration of the state case in case of constitutional machinery breaks down? Article 356. The president can make laws through ordinances during recess of the parliament. Which of the following qualification is not an essential for a person to become vice president? He must be a graduate. ये essential नहीं है guys. He must be Indian होना चाहिए. He must be qualified to be member of लोक राज्यसभा, ये भी होना चाहिए. He must not be less than 35. Minimum age 35 years होनी चाहिए. VP बनना है तो. How many types of emergency have been visualized in Constitution of India? 3 emergency. The impeachment proceedings against the vice president can be initiated only in Rajya Sabha. Who appoints the governor of Jammu and Kashmir president? The president of India can be removed from his office by the parliament. If president returns a bill sent to him for his assent and parliament once again passes the bill in its original form, then president gives assent to the bill. Okay. B. If a minister loses a no confidence motion, then whole council minister resigns. The only instance when president of India exercised his power of veto related to the Indian Post Office. The control of preparation of electoral rolls for parliament and legislature vests with the election commission. What is contained in the 10th schedule of constitution? 10th schedule में क्या है? Provision regarding disqualification on the grounds of defection. The election commission holds election for parliament, state legislature and post of president and vice president. For election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by any citizen of India whose name appears in the electoral roll of the constituency. In India, इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, हाइड हो गया. Political parties are given recognition by election commission. The vice president is elected by electoral college consisting of members of both the houses of parliament. The election commission does not conduct elections to the local bodies. The maximum age prescribed for election as a president is no such limit. कोई limit नहीं. Maximum age कोई limit नहीं. The power to decide an election petition is vested in the election commission. To elect the president of India, which one of the following election procedures is used? System of proportional representation by the means of single transferable vote. In which year were the first general elections held in India? 1951 से 1952 general elections पहली बार हुए थे. Important है. Election to the House of People and Legislative Assembly states are the adult franchisees. Who appoints the Chief Election Commissioner of India? President appoints. Guys, Chief Election Commissioner कौन है? Chief Election Commissioner इस टाइम है राजीव कुमार जी. ठीक है, राजीव कुमार. ये देखना, इलेक्शन कमीशन इंडिया में जाओगे आप, विकिपीडिया में वहां मिल जाएगा. President. Which among the following is not a part of electoral reforms? Installation of electronic voting machines. Recognition to the political party is accorded by the election commission. The chief minister of the state in India is not eligible to vote in the presidential election if he is a member of upper house and the state legislature. ठीक है, upper house and state. guys, ये 100 क्वेश्चंस हो गए हैं. guys, इसको कम से कम आपको 2 बार देखना पड़ेगा. बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा ये, मुश्किल से 15-20 मिनट में कवर कर दिया मैंने. 2-3 बार देखो कि क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और आपने पहले पढ़ रखा है सब, तो आपको आपके लिए इजी भी रहेगा, ज़्यादा समझ जाएगा. बाकी गाइस, अगर अभी भी टाइम है, जो लोग सीमेंट के मार्क्स नहीं ले पाए चेक कर सकते हैं. 10 मार्क्स 499 के. 10 में से 5-6 मार्क्स भी दोगे, बाकी मार्क्स सबमिट करके एनालाइज करो, फायदा रहेगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग के रिजल्ट्स हैं गाइस. तो अगेन स्टार्ट अर्ली, स्टे अहेड. सिर्फ और सिर्फ गाइस कैट पे डिपेंड मत रहना. कैट में अगर एक सेक्शन भी खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा. और ये मत सोचना कैट हो जाएगा बाद में स्टार्ट करेंगे. कैट के 10 दिन बाद स्नैप होता है, और स्नैप को इजी मत समझना गाइस. इवन कोई भी नॉन कैट एग्जाम जो आपको अच्छा पैकेज दे रहा है, इजी नहीं है. ठीक है, बाकी गाइस ये रिजल्ट्स हम लोग सीमैट के बहुत से रिजल्ट्स रिव्यू आते रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसा है जिसको कैट प्लस नॉन कैट दोनों चाहिए, वो भी इंक्वायर कर सकता है. हम लोग का कंप्लीट एमबीए प्लेटिनम कोर्स भी स्टार्ट हुआ रिसेंटली. आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. गाइस शेयर करो, बिकॉज काफी लोग के लिए लास्ट ऑप्शन है सीमैट, काफी लोग की हेल्प हो जाएगी. ठीक है, और अगेन चैनल को फॉलो करना. गाइस ये नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो.
बाकी mockzone.in/cmat में जाओगे तो आपको मॉक्स वगैरह मिल जाएंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।